It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom and it was the age of foolishness. It was the season of light and it was the season of darkness. And this words ring true more than ever before. The London Bridge is always falling down. We lose the Queen, we get the King. We are out of Brexit and now we are thinking of our colonial cousins to come and fill the vacant jobs. We had a vegetable crisis. More than ever before, more than ever again, Britain needs an icon. Britain rises from its own graves like a phoenix, and Britain stands tall because of all the skeletons that Britain stands on. The pound is not pounding as it once pounded. The Beatles are not all there. Lady Diana is no more. And now, even James Bond is dead. Welcome to BBC Breakfast News. I'm your host Arjunaya, and our top story today. The country known as England has announced plans to shut down. Best known for football, poor weather, and invading countries for spices but never using them. England has been in trouble for the past few years, with the country unable to appoint a permanent manager for more than a few months. England has been a mainstay on the world stage since being established back in the 10th century, but has since struggled to modernise, persisting with funding a monarchy while other countries were building spaceports. The country in recent years has also struggled to capture the interest of a younger audience. For more on this story, let's move to our field correspondent Gus. Over to you, Gus. Yeah, cheers, Arjun. Truly, such tragic news to befall a nation that used to be so great. As corner shop prices continue to skyrocket, the youngsters have made their intentions clear. If change doesn't arrive, and fast, they will be forced to migrate elsewhere to try and satisfy their confectionery needs. It seems that good old tea just isn't cutting it anymore. Maybe it's time for masala chai. Anyway, that's all from me, folks. Back to Arjun in the studio. Thanks, Gus. But it seems all hope for England is not lost. There is talk of a buyout from India, who claim they already have a large consumer base in the country, many of whom are supporting a new candidate for the leadership of England. A few moments later. मोहन भाई नमस्कार. हे अजय, क्या हाल है यार? आज कैसे याद किया? वो भी फेस टाइम पे? I wanted to talk to you about something very urgent, dear. हाँ, बोलना. You know, the country is going through inflation, stagflation, crazyflation, whatever you want to say. I swear it, man. Not looking good. And there is no hope, right? In 2024, Labour will definitely win. Rishi can't make a difference, and at that stage we have only two choices: either we leave the country or we fight for a change. What do you mean fight for a change? I think we'll have to get somebody up there who can be a great PM, make all the changes, and get us out of the mess, correct? Arey, agreed, boss. But who? I was thinking we should get Sudha to stand for the PM. Sudha? She knows everybody and everything. She knows everyone. The moment she walks into the high street, she's like the Indian politician, right? She has to just raise the hand and people will be waving at her. And you call her, you don't need a Google or AI. You simply have to say, Sudha, can you tell us which is the nearest men's grooming, not nearest, cheapest men's grooming? And she will not only tell where it is, but she'll also say the nearest best car park. That's the knowledge she has got, that's the connection she has got, that's the power she has got, which she can do. She will bring diversity into the system. She will bring, as a woman, the first ever woman prime minister who is Indian origin and real Indian origin, not second gen. Yeah. Rajay, great idea, man. I mean, ab ki baar Sudha Sarkar, pakka. So
let's go for it. Yep, agree. Great idea. Let's do it. She has to do it, not for us, for the next generation. नहीं, you're absolutely right, man. Who better than Sudha, right? ये तो वही बात हुई कि बगल में छोरी और शहर में डिंडोरी. नहीं, शहर में सीना जोरी. Anyway, छोड़. You know what I mean. And Paul Scully, as you may know, the Sutton MP, is standing for the London mayor election. So we have a gap here. She can easily work on that so that she gets the seat. And we just need is a fundraising campaign. Fundraising, fabulous idea. And you know what? I know just the person who I can get to organize the whole thing. Leave this with me. I've got it sorted. So go for a fundraising party. I'll be there with my hat I've got my hat ready as well. to get the money, and we'll make sure she wins. We can do it. You should ask few more opinions, but let's go for it. Thank you, dear. And I forgot to say one more thing. You know what? If we don't do it, it's definitely going to affect your large property portfolio and my small pension savings. Yeah, remember. अरे बाप रे, जाते जाते इसने तो पर्सनल बना दिया यार. अब तो कुछ करना ही पड़ेगा. A few moments later. Hello. Hey, Minx. Hi Mo, what's up? Hey. अच्छा सुन ना यार एक काम था. बोल ना, for you guys anything यार. You know ना UK का क्या हालत खराब हो रहा है. तो I was talking to a few friends and we just thought that it will be really good to get Sudha to stand for PM. We need somebody with her charisma, mass appeal, her ability to get things in order and control, and her financial acumen to get things back, the economy back on track. क्या बोलती है? Wow, that's an amazing idea. I also thought so. But listen, एक fundraiser organize करना है to a massive, big, excellent one to collect all the funds. Fundraiser? Of course यार, no problem. That's a brilliant idea. तू करेगी क्या? बस क्या यार मो, कितना लोग के लिए किया है? Anything for Sudha यार. Nice. पक्का ना हो जाएगा. ये सब celebrities, everything you'll ये manage. तो मेरा बाएं हाथ का खेल है. You know how good I am at it. तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले. Yes, I'll rope in some celebrities, some VVIPs. We will make it an event. तू भी क्या याद रखेगा यार? चल excellent यार. Thanks man. Okay, I'm leaving the fundraiser to you. Okay. Perfect. Just one more thing, Minx. कोई PR agency है क्या पहचान का कोई अच्छा वाला who will actually just take the whole thing, sort the whole thing out for us? हाँ PR एजेंसी तो मैं बहुत पहचानता है यार. एक है एकदम मेरा पहचान का एक. हम लोग उसको RD बोलते हैं. थोड़ा हटेला टकेला टाइप है, लेकिन काम उसका एकदम दासू है. मैं अब भी भेजता तेरे को उसका नंबर. Thanks, Minx यार. You're a real star. Thank you man. बस क्या? Anything for Sudha यार. चल excellent यार. Thanks. Yes, let's make this happen यार. बिल्कुल. चल तू ऐश कर. See you soon. Bye. A few moments later. ये क्या अजीब रिंगटोन है यार. हेलो. मेरू चाय जोड़े फाफड़ा लांचे जो. क्या नंबर दिया मिंक्स ने यार. ये कोई फाफड़े का दुकान लगता है. हेलो. हेलो फोन चालू है. हेलो हेलो कौन बोलता है? हाँ हेलो. इज दिस रतन टाटा? हेलो डाटा झुंझुनवाला उर्फ रतन टाटा स्पीकिंग. डाटा? Yes sir, Dad was working in Datamatics, Nariman Point, Maker Bhavan. अच्छा ठीक है. अच्छा लिसन, मेरा नाम मोहन अय्यर है. मैं आपको लंदन से फोन कर रहा हूँ. लंदन? अरे मेरू चाय जमा दे, लंदन की फोन आया. हाँ सुनिए ना. तो आपका कांटेक्ट मेरे को मीनाक्षी से मिला है. आप मीनाक्षी को जानते हैं? मीनाक्षी बहन तो बहुत ब्यूटीफुल है और उनका दिल भी एकदम सुंदर है. अच्छा ओके. अच्छा सुनिए, बात यह है कि मेरी वाइफ शी इज गोइंग टू बी रनिंग फॉर इलेक्शंस. ये देखो मेरी मेरू तो जॉगिंग भी नहीं करती है. और एकदम यूनिक अपॉर्चुनिटी है वेयर शी हैज रनिंग फॉर अ सिंगल सीट बट शी इज ऑलरेडी गॉट एग्रीमेंट विद ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज that she will be the consensus candidate for the PM. कंसेंसस कैंडिडेट? अरे बहुत सेंसिबल आइडिया ये तो.
तो वो एक सीट जीत के पीएम बनने वाली है, ऐसा इलेक्शन रेस है। तो मेरे को एकदम जबरदस्त पीआर एजेंसी की जरूरत है। तो मीनाक्षी ने बहन ने बोला था कि यू आर अ वेरी गुड पीआर एजेंसी, यू आर अ बिट एक्सेंट्रिक बट यू डिलीवर रिजल्ट्स। सर एक्सेंट्रिक नहीं तांत्रिक है मैं, 7 चिल्ड्रन है, डिलीवर तो करता है। आप पीआर एजेंसी ही हो ना, पब्लिसिस्ट ही हो ना आप। With due respect, sir, we are a publicist. We are not a public PR. We are प्यार। पब्लिक को किस दो, पब्लिक किस वापस करता है, एंड दैट क्रिएट्स लव। अच्छा, मीनाक्षी बहन को बोलना तुमको फाफड़ा, दहीठरा, मुठिया, जलेबी मांगता है, वो भी लंदन डिलीवर करेगा। लुक मिस्टर डाटा, आप ये बार बार सेव घाटिया पापड़ी की बात करते हो। आई डोंट नो व्हाट दैट हैज टू डू विद इलेक्शंस। कैन यू डू द जॉब और नॉट? सर 1 मिनट श्वास लेने दो। ऑफ कोर्स आई कैन डू, आई एम द बेस्ट पब्लिकिस्ट इन टाउन। ऐसा तो नहीं ना दैट आई हैव टू लुक फॉर समबडी एल्स, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? First of all, we need to put the news in every TV channel, from Dharavi TV to Czechoslovakia में जितना टीवी चैनल है सब में न्यूज फैला देने का बहुत आइडियाज है। सर मेरा भी क्रिएटिविटी देख लो जरा 1 मिनट के लिए। सुधा जी किसी से ना जुदा जी। आई रियली होप यू डोंट डू योर ओन कॉपी राइटिंग। और मेरा कजिन है, वो वर्ल्ड बेस्ट कॉपी राइटर है, वर्ल्ड बेस्ट। चलो ठीक है, फिर लग जाओ काम पे एंड कीप मी पोस्टेड, ओके? फोन મૂકી દીધો મેરું, લંડન જવા માટે તૈયાર થઈ जा। हेलो, मैं रतन डाटा बोलता हूँ। जरा ये सेक्शन का तू मेरे को इंट्रोडक्शन करके दे देना। पहले तेरा स्पेलिंग देखिए, क्या सेलिब्रिटेनी है? अरे भाई वो ब्रिटेन का है, ब्रिटानिया ब्रेड खाता था ना तू बचपन में। ये क्या पीछे, तेरे पीछे कौन भौंक रहा है? अरे वो रशियन न्यूज रीडर पढ़ रहा है। सुधा जी जो बनने वाली है ना प्राइम मिनिस्टर, सुधा जी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर बनने वाली है। अरे आज को मिनिस्टर है, कल को तो प्राइम मिनिस्टर है ना। दिस इज नॉट द टाइम टू लिंक रशियंस विद द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। डिलीट मार दाता। ये सेक्शन तू कर, नेक्स्ट सेक्शन में करेगा, प्रॉमिस। स्पेशल थैंक्स मस्ट बी गिवन टू पराग भाई who took out the voice of the biggest celebrity of our country. Don't tell anyone. देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटानिया देश को एक नए प्रतिनिधि की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सुधा जी को अपना समर्थन देकर विजयी बनाए। हमारी नेता कैसी हो? सुश्री सुधा जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? सुश्री सुधा जैसी हो। गली गली में शोर है। अरे भाई गली गली में शोर है। सुधा ही मोहन के दिल का चोर है। अरे ये तो पर्सनल हो गया। अरे बाप रे, सर संभाल लीजिए। मित्रों, आप सबने कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं सुधा है तो संभव है। अरे भाई सब मिलकर बोलो, अब की बार सुधा सरकार, अब की बार सुधा सरकार। Welcome back to BBC Breakfast News. From the latest feed we've received from Sudhaya's campaign manager, we understand that her campaign party have organised a gala fundraising event and the world's who's who are in attendance. Our reporters managed to get a sneak peek of the event. And then the night finally arrives. देवी और सज्जनों, सुधा अय्यर इलेक्शन कैंपेन के इस फंड रेजिंग इवेंट में आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट एंटरटेनमेंट से भरपूर है। इसमें आपको लखनऊ की नजाकत, केरला की अदा, पंजाब का जोश, तमिलनाडु की तालमेल,
गुजरात की गुदगुदी और बॉलीवुड की चमक नजर आएगी। और इतना ही नहीं, इसमें आपको ग्रामीण भारत की आदिवासी छवि भी नजर आएगी। ये कार्यक्रम सुधा की सहेलियों ने बनाया हुआ है। और तो और इन गानों के बीच आपको कुछ रैंप वॉक्स का भी आनंद मिलेगा। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, दिल और बटुए को खोल लीजिए, क्योंकि आज की शाम की पहली परफॉर्मेंस ऑल द वे फ्रॉम आपरो गुजरात। बिजनेस है मंदी और पड़ रही है डंडी, लेकिन फंड रेजर में आए हो तो डोनेट तो करना पड़ेगा। सुधा अय्यर एज यूके's PM, this is a match made in heaven like जलेबी and फाफड़ा, says दीपा उर्फ सीमा थपारिया, इंडिया टॉप मैच मेकर। ऊपर कस आ भी गए हो, आकर मैं जा भी गए हो, पकौड़ा जलेबी सब खा भी गए हो, नूर पे आग लगा भी गए हो। नाचो सब slowly slowly girl, I like तेरी चनिया चोली, आए कदम बने मेरे पास कैश, लड़कियों के साथ खिलू आप में चोलियां। Money, 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 make money, 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 make money. साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है सटन की अजीम फनकारा, मलिकाए हुस्न, नूर नजर, मीनाक्षी। झिंगालाला हूँ, झिंगालाला हूँ, झिंगालाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अब जो कलाकार आपके सामने आ रही है, उसने ग्रामीण भारत की छवि में एक आदिवासी डांस आइटम तैयार किया है। दिल और बटुआ खोल के स्वागत कीजिए सुप्रिया। ஒட்டி மடியில நான் மடிஞ்சிட்டேன், முத்தாம தந்த பூவ கொடுத்த சிக்கர வளர்த்த பேசி சிரிப்ப சாமனியும் கூட பேசி போன குடிகார ஆகி போய் மச்சினி குடி தோண்டி தள்ளி புட்டா, மச்சினி ஆசைய பேசாமதா என்னையும் கரையில விட்டு புட்டானே. अब इन गानों से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, बिकॉज वी विल कंटिन्यू आवर लिस्ट एंड इंट्रोड्यूस Madisar Mami with a twist. Just before we cut into the ramp walk by our own Madisar Mami Rani, here is a small incident that happened while she was preparing for the event. आओ देखें.
रांस जल्दी यार, मेरे को क्रिकेट के लिए टाइम हो रहा है। कितना दिन हुआ मैं सेंचुरी मार के। स्टेप नहीं लिया ना, एक स्टेप में फोटो नहीं खींचा ना। हे भगवान, तेरे को एक एक स्टेप में सेल्फी ले रहा है क्या? Not being satisfied with just saying DJ वाले बाबू मेरा गाना चला दो like all other women, Rani wanted to have a special song that symbolized Sudha, and the song that she chose was Project Management. It's hip, it's sexy, it's cool. Project Management. We'll make a project manager out of you. Project management is time management. The joy in completing a project is not just the finished result, but what you discover during the process. Project Management. It's hip, it's sexy, it's cool. Project. बर्तानिया की राजगद्दी में एक रानी का होना बहुत जरूरी है। एलिजाबेथ तो चली गई, चार्ल्स को छोड़ गई और चार्ल्स निकला पानी कम। हमें अब आवश्यकता है ऐसी एक रानी की जिसे देख के दिल मचलता हो और पैर ठुमकता हो, ना सिर्फ भारत का लेकिन लंदन का भी। यही बात समझाने के लिए हमारे सामने अब आने वाली है अनीता। आपने बॉम्बे टू गोवा तो सुना होगा दोस्तों, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक ठुमक लंदन से सीधा मुस्लिम पट्टी तक पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने जो कलाकार आ रही है वो है अर्चना। முசுலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு வசரம் பார்த்தே என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு. முசுலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு வசரம் பார்த்தே என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு. வச்சு குச்சனூர் பரவள மெதுவாக செல்லேண்டி உன் கூட இர வச்ச பூவு கூட நுரண்டி சிதடி குதி போட்டு வந்தேண்டி. And now from God's own country, from the idyllic backwaters of Alleppey. नहीं, वो राहुल गांधी का सीट नहीं है, ये दूसरा है, sorry. Now from God's own country and the idyllic backwaters of Alleppey, in full solidarity of Amalya Lipine becoming UK's next Prime Minister, showing the support from Kerala, our own Rajimol. Ladies and gentlemen, वो कहते हैं ना, बिलाची नागिन निगाली नागोबा डोलायला लागला। ठीक उसी तरह आपसे भी अपने कुर्सी में बैठा नहीं जाएगा, आपको भी उठ के नाचना ही पड़ेगा। और फिर ये मत कहना अतः माझी सटकली। प्लीज वेलकम फ्रॉम महाराष्ट्र विद्या।
देवियों और सज्जनों, जैसे कि हर भारतीय जानता है, कोई भी इलेक्शन कैंपेन बंगाल के बिना अधूरा है। वो कहते हैं ना, व्हाट कोलकाता थिंक्स टुडे द रेस्ट ऑफ इंडिया बिलीव्स टुमारो। प्लीज वेलकम फ्रॉम कोलकाता आवर वेरी ओन प्रिया। जी हाँ दोस्तों, यू आर इन फॉर अ ट्रीट टुनाइट। ऐसे ही एक के बाद बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आपके सामने आज शाम को हम ला रहे हैं। अब अगला परफॉर्मेंस आपके होशो हवास को उड़ा देगी। पंजाब की लस्सी मलाई मार के भूमिका। तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल में, तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल में, और रूप की और रानी तू परांदे को संभाल में, रूप की और रानी तू परांदे को संभाल में। किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। मैंने भी तो मुश्किल से खेलना सीखा, मैंने भी तो मुश्किल से खेलना सीखा, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आएगी सीखा, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आएगी सीखा। आशिक का परानी रात बांध दूंगी, होगी कैसे मुश्किल। देवी और सज्जनों, अब वो वक्त आ चुका है कि हम आज शाम की आखिरी परफॉर्मेंस आप सबके सामने लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक सुधा अय्यर इलेक्शन कैंपेन में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हो, तो यही वक्त है। चेकबुक खोलिए, लिखिए एक बड़ा सा रकम और डोनेट कीजिए। एंड नाउ ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मेरी जान कोमल। मेरी हस देवे जदों तेनू तकदा, जान तो नहीं ज्यादा तू पास मैनू लगदा। मेरे खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा, तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकदा। मेरे सजदों को साथी एक तेरा दर काफी, खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा। नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा, सोने मैं तेरे तू आना कोई होर मंगदा, तू आना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा सोने मैं तेरे तू आना कोई होर मंगदा, तू आना कोई होर मंगदा। Ladies and gentlemen, thank you so much for your presence and donating generously to the Sudha Aiyar election campaign fundraiser. Unfortunately, this brings us to the end of the... Oh, hold on a minute. Wait, there's a last minute addition to this gala event. Sit back in your seats, ladies and gentlemen, or dil tham ke baithiye for another mind-blowing performance. शिकारा है सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, लम्हा ये सुनाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया।
Wow, what an event. Earlier reports indicate that this event was a massive success, with experts predicting that this one event will raise more than Warren Buffett's lifetime earnings. And as we all know, money can win elections in England. And Sudha Iyer's campaign looks like it's heating up very nicely. Meanwhile, हेलो, मैं रतन डाटा बोलता हूँ। बोल बोल, क्या बोलता है? बोल बे क्या करता है तू? मैं तुम्हारे से बड़ा है ना? अरे बड़ा है तो क्या, लंदन ब्रिज पे खड़ा है। जरा ये सेक्शन का तू मेरे को इंट्रोडक्शन करके दे देना। फ्रॉम द एवरग्रीन्स ऑफ केरला, सुपर डुपर ऑलमोस्ट सपोर्टिंग एक्टर बोल रहा है। इतना इंग्लिश क्या मेरे बाप को भी नहीं आता है। യുകെയിലെ നാഷണൽ ഡിഷ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ നാഷണൽ ഡിഷ് ഓഫ് യുകെ? നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല നാഷണൽ ഡിഷ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നാഷണൽ ഡ്രസ് ഓഫ് യുകെ? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദ സാരി. ഇതാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുധാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവണം. നമ്മുടെ ഇനിയും യുകെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുധാ ഭരിച്ചേരും. അബ്കി ബാർ സുധാ സർക്കാർ ലാഭ. वाह क्या तीखा व्यंग किया है तूने पॉलिटिक्स पे। खाली फॉन्ट अच्छा नहीं लगा मेरे को। बे फॉन्ट की माँ बहन एक मत कर, पैसा निकाल, चल पैसा। मोहन साहब 1 मिनट, सेकंड फोन पे फोन आ रहा है। सुधा बहन बोलो। हेलो आरडी, हाँ मोहन बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोलो। आरडी, ये तू क्या प्रमोशन वीडियोस बना रहा है यार? तू लोग जब बात करते हैं तू बीच में टेक्स्ट डाल रहा है, सब टेक्स्ट डाल रहा है, सबस्क्रिप्ट डाल रहा है. इट्स सो ब्लडी डिस्ट्रैक्टिंग यार. डोंट डू इट लाइक दैट. मेक श्योर दैट व्हेन पीपल आर टॉकिंग दे हैव अ क्लियर प्लेटफॉर्म टू टॉक. तेरे को आगे पीछे जो करना है कर, लेकिन लोग बात करते समय मत कर. इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. ओके सर, ओके ओके सर। वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। पुष्पा, ए पुष्पा, I hate fears రే. నేను పుష్ప ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళి లండన్ వచ్చినాను. నేను ఇక్కడ వచ్చి ఒక విషయం చూసినాను. సుధా గారు మాదిరి యాప్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీకు దొరకదు. ఈ లండన్లో అమ్మాయిలందరూ చీరలు వేసుకోవాలంటే సుధా గారికి ఓట్ చేయండి. లండన్లో ఉండే అన్ని రెస్టారెంట్లను మంచి భోజనం వేయమంటే సుధా గారికి ఓట్ చేయండి. యూకే గవర్నమెంట్లో మీకు మంచి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కావాలంటే బోరిస్ జాన్సన్ మాదిరి మనుషులను తరిమి సర్చ్ చేయాలంటే సుధా గారికి ఓట్ చేయండి. హిందీలో తిప్పి చెప్తాను, అందరికీ అర్థమయ్యే మాదిరి. आपकी बार सुधा सरकार. I'm sure over the last few weeks everyone has heard the rumours about how the newest prime ministerial candidate met her husband. But don't worry, our reporters managed to get the inside scoop. In India, marriage is a very big industry. The marriages, they are between two families. The two families have their reputation and many millions of dollars at stake. And so the work of a matchmaker is so important. I help guide their children so they can find a life partner. Namaste. I'm Seema Taparia. I'm Mumbai's top matchmaker. Hello beta, kaise ho? Namaste Seema auntie. Welcome. I match just word of mouth. I meet people, airport, mall, market, anywhere. I say I'm Seema Mami. My profession is based fully on goodwill only. I think it's very important women being a matchmaker. Seema auntie, you are an answer to my prayers. I think of my clients as my own children. I think if I have to do wedding for them, my son or my daughter, how I would do it. Seema auntie, I am ready to get married. I am ready to get hitched. But problem is, I am so busy in my work that I have absolutely no time to go dating, socialize, meet people,
and you know, I'm not a very technology savvy person, so Tinder, Grinder, these are not for me. So Seema aunty, you are the answer to my prayers. Please do something for me. We have all types of person in the world. Tall, short, big, small, with hair, without hair. Seema aunty, I completely agree with you. 100%. You cannot get 100%. 60% is good match, good enough. Yeah, 60%. More than enough, more than enough. 100% who wants? 60% is enough. You have to adjust. I agree. A little compromise is wanted. You cannot get everything. You know, it is not like ordering from a menu. Once you adjust, you are flexible, all is well. That is very important in marriage. Seema aunty, you know me. I'm a very adjusting kind of person. My demands are very, very minimal. अब बताओ, तुमको क्या क्या चाहिए लड़की में? I just need one thing. बस कोई मेरे स्वैग के टक्कर में हो. बस. और कुछ नहीं चाहिए. Mohan, I just want to know, swag means like what like? स्वैग, सीमा आंटी, स्वैग मतलब समझो वो कहीं अकेले चली जाए, लोग उसको देख के ये बोले कि यार पत्नी अगर ऐसी है तो पति में कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, वो स्वैग. Okay, great. What else you like? और क्या चाहिए सीमा आंटी? सुंदर हो, सुशील हो, गुणवंती हो, घर बच्चों का ख्याल रख सके. हाँ, मैं खाने का बहुत शौकीन हूं, तो एकदम बढ़िया खाना का प्रबंध करना आना चाहिए उनको. और इसके लिए यह जरूरी है कि नॉट ओनली डज शी कुक रियली वेल, बट ऑल्सो शी हैज इनफ नॉलेज अबाउट all the restaurants in our area and the periphery area as well, and she knows their menus, their reviews, their bestsellers, all of that so well that she is able to organize the best food for us at any moment. Very, very important criteria, Seema aunty. बाकी क्या? बाकी पढ़ी लिखी हो, मेरे जितना, कमा लेती हो. अगर मेरे से कम तो कोई बात नहीं, अगर मेरे से ज्यादा तो मैं नौकरी छोड़ के घर पर बैठ जाऊंगा. हाइट अच्छी हो बट थोड़ा मेरे से कम. So I think height is not a problem. You are marrying a person, not a height. और एक बात सीमा आंटी, नाचने गाने का शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नाचने गाने का शौक है. अगर वो नाचने गाने लगी तो मुझे कौन देखेगा? तो इसके लिए नो. Yes, अच्छा. सीमा आंटी, एंड आपको तो बॉम्बे वालों का पता है ना, ये एक सेंटेंस में दे विल शिफ्ट फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी टू हिंदी, एंड हम तो ठहरे साउथ इंडियन, तो मैं तो तमिल और मलयालम भी घुसा देता हूं उसके अंदर. तो लड़की को भी ऐसा होना चाहिए जो हु कैन डील विद ऑल दीज लैंग्वेजेस इन अ सिंगल फ्लो, यू नो, सीमलेसली. तो अगर लड़की भी बम्बई की हो तो ये नेचुरल होगा. दैट विल बी इवन बेटर. Yes, अच्छा. Now I am thinking of one proposal. Her name is Sudha. Have a look. She is also from Mumbai, so local hai. She meets all criteria for you. 100% match. Sundar hai, Sushil hai, well educated hai, swag hai. So I think we can proceed. First is marriage, then love, always. कर्म तो करना है, रेस्ट भगवान और बुद्धा के हाथ में. सीमा आंटी, बुद्धा का तो पता नहीं, अब तो लगता है सब सुधा के हाथ में है. हेलो, हाय सीमा आंटी. मोहन बेटा, कैसा चल रहा है? I want to listen great news as soon as possible. सीमा आंटी, यू आर अ मिरेकल वर्कर. क्या लड़की चुना है आपने. आई एम एब्सोल्युटली बोल्ड ओवर. मैं तो बस एक दो बार मिला हूं, बट ऐसा लग रहा है कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है. मेरी तरफ से तो हाँ है. बधाई हो. I am very happy for you. I know that way of the girl will suit you. Sudha is perfect for you. शादी कब है? सीमा आंटी, शादी का क्या है, बस चट मंगनी पट ब्याह. अच्छा, मैं आऊंगी और खूब नाचूंगी. हाँ आंटी, बिल्कुल बिल्कुल. आपको तो आना है और नाचना ही है. और नाचने का सवाल तो अब मेरे जिंदगी में रहा ही नहीं. अब तो नचाने वाली आ रही है. सुंदर कल्याण मुत्तु जोड़ी कल्याण
ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ. कौन कम वक्त इतनी रात गए हमें फोन कर रहा है? सर रतन टाटा बोलता हूँ. अगर तुम रतन टाटा हो, बिरला हो या बाटा हो, हम राज है. और हम राज ही नहीं, हम राजकुमार भी है. सर पब्लिसिटी मूवी बना रहा है, जरा एक इंट्रोडक्शन कर दो. पिक्चर बनाना, पब्लिसिटी करना कोई बच्चों का खेल नहीं. नाक कट जाती है तो प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ता है. सर ने बोला कि आप हाँ प्यारे मोहन मोहन हमारा बहुत प्यारा है. बेटी सुधा अच्छी बच्ची है, नादान है लेकिन अच्छी है. सर હું પણ એ જ કહું છું, લમણાજીક નહીં કરું. जरा मेरी खैर पक पक मत करो. मोहन और सुधा के लिए हम मौत की आहोश में से भी पार आ सकते हैं. समझे नील कमल? Very down to earth, head of armed defense husband Sanskar, I think gives a detailed and rather honest expectation from government, king and country. Narrated by Ratan Tata, legally born in Valsad as Tata Junjunwala. महेश सुब्रमण्यम लंदन में रहते हैं. इनका दिल बहुत बड़ा है और जिंदगी का एक ही नियम है, जो तुम बोओगे वही काटोगे. आज सुधा जी जो खड़ी हो गई है तो उनको सपोर्ट करने वाले भी हजारों मिल गए हैं. लीजिए सुनिए महेश सुब्रमण्यम क्या कहते हैं. Here's bringing you the latest on the ongoing elections. We've been hearing from various distinguished personalities, including a notorious gangster from India, a rogue politician from Pakistan. But what do the common men have to say about this? We've managed to get some time with Mr. Mahesh Subramanian, who is the head of the Armed Distressed Husbands Sanstha. Hello, Mr. Subramanian. Hello there. What are your thoughts on the latest elections? Well, given the demographic I represent, anything that makes our lives easier, our households run better, I think that person and their policies is going to be a winner. Any thoughts on Mrs. Sudha Iyer's candidacy? Is she standing? Yes, that's confirmed. Oh, that's great news. If she can bring color into our lives, the way she brings them into her saris, she's going to go a long way. Having read through her manifestos, she does have very, very unique ideas and policies proposed. What are your thoughts on what she has planned for the education sector? Well, from what I hear, she has 2 kids who have been through the grammar school process. So she has a ready-made handbook and it'll be of great use to people like us who are going through that process now. And I'm sure she'll have some very clever ideas in that space. So more power to her. Any thoughts on her policies proposed for the NHS? Yes. Every morning at 8 o'clock when we try to call the GPs and get an appointment, we're always on hold or we don't get any appointments. And she has again 2 kids, one already a doctor and another waiting to be one. It's great that she's contributing to the problem that the NHS is facing by increasing the workforce there. So yes, absolutely. Any thoughts on her proposals for the entertainment industry? She's a foodie, I do know that, and she throws great parties. So it's going to come of great help to people like us. We are happy, our wives are happy, and we have lots of places to explore. Any final thoughts? Well, if she can get a person like me to campaign for her, she's definitely powerful. So leave me the hell alone, and more power to Sudha. Ab ki baar Sudha Sarkar. तो साए खुदा जिससे डरता है अपन और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन. हेलो आ रिंगटोन तो बहुत विचित्र है. मेरू खामोश. अरे ताश के तिरपल में पत्ते. 12 बजे रात को तू मुझे फोन कर रहा है. जली को राख कहते हैं, मैं तुझे राख कर दूंगा. अरे मेरू ने अभी मेरा टोस्ट सैंडविच राख कर डालेला है. मिट्टी को खाक कहते हैं, मैं तुझे खाक कर दूंगा. सर मिट्टी को सैंड कहते हैं, सैंड. सर वो सब चित्तेड़ा भमेड़ा छोड़ो, आपको एक इंट्रोडक्शन करना है. सर आप किंग हो अमिताभ विनोद के साथ. अरे तीसरे बादशाह हम हैं. मैं कर देता हूं. थैंक यू सर. टी राजेंद्र तमिलनाडु से है.
तमिलनाडु के बड़े बड़े दोस्त हमारे मित्र रह चुके हैं और टी राजेंद्र बहुत बड़े इंसान है, मैं उसको सलाम करता हूं। वो मेरे से भी बड़ा गैम्बलर है, टी राजेंद्र। என் இனிய தமிழ் ஆங்கில மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். என்னுடைய உயிர் நண்பன் டி ராஜேந்தர் உங்களுடன் சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளார். அவர் என்ன சொல்வார் என்று நம்ம கொஞ்சம் கேட்போமா? அட தம்பிகளா, உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சொல்றேன், கேட்டுக்க. சுதாவுக்கு பார்த்து போடு ஓட்டு. போட்டா அவன் புள்ளைக்கு உண்டு ஆக்ஸ்போர்ட்ல சீட்டு. தனியா இல்ல ஊரையே நீ கூட்டு இவங்க எல்லாருக்கும் சுதாவோட கெத்த நீ காட்டு. டெண்டுல்கர் போல அடிப்பா பாரு ஷாட்டு. இந்த உலகமே ஏந்துன்னு கேட்கும் வாட்டு வாட்டு. நம்ம மோகனை போல, என்னது நம்ம மோகனை போல உலகத்தை பண்ணுவா ஒரு ஆட்டு. நல்லா வெயிட்டா காஞ்சிபுரம் சாரிய போட்டு. உனக்கு ரொம்ப கோல்டா இருந்துச்சுன்னா மாட்டு நீ ஒரு கோட்டு. மச்சான் திரும்ப சொல்றேன், சுதாவுக்கு பார்த்து போடு ஓட்டு. புரிஞ்சுதுல? ஒழுங்கா பண்ணணும், சரியா? வரேன் தம்பி. Welcome back to BBC Breakfast News. The news of the new Prime Ministerial candidate is spreading like wildfire across the globe. It's incredible to see people from all kinds of countries and their support for the new candidate. Let's join some of our international news correspondents to see what the reaction is like from their countries. Welcome to Crack News after a short break on Kamine Friends Television. Sally Anderson's Moko is an example of white privilege, says Maori academic. A New Zealand woman makes history by becoming the first person with a face tattoo to anchor primetime newscast. Now for international news. The United Kingdom general election is deciding on the new Prime Minister. Our correspondents will bring us the ground reality of contestant Sudha Mohan's popularity chart on what people think about Sudha Mohan's chances of winning the polls. Follow up on the actions to be taken. Are you kidding? Of course she will. I'm just worried about her party members. They are going to have sleepless nights. Oh, thank you for that. Having it to the votes. She better work at the way to get off our backs. Sudha, the right candidate. Is she? It's upsetting that you would even ask that. Of course she is! Is Sudha the right candidate? What better choice do we have other than this to win all? Is there anything she cannot do? I agree. We'll send her later to the polls. Of course you will. To be honest, there's no one better for the job. Do you think Sudha getting the, do you see her getting the task done? Absolutely. Sudha is my beautiful darling. Thank God the toilets have locks, otherwise Sudha would have followed me too. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। और अब कुछ बैरून मुल्क की खबरें। बरतानिया में सियासी बहरान अपने उरूज पर है। आजकल भारतीय निजात सुधा अय्यर बरतानिया के वजीर आजम बनने के लिए पसंदीदा हैं, ऋषि सनक की जगह लेने के लिए, जिन पर गुज़िश्ता हफ्ते से मुआशी बदहाली के लिए इस्तीफा देने का शदीद दबाव है। इस बात पर हमने बर्रे सगीर के आम लोगों से पूछा कि वो इस बात पे कैसा महसूस करते हैं। आइए आपको पेशावर ले चलते हैं, जहां हमारे नमानिगार ने सुधा अय्यर के बरतानवी वजीर आजम बनने के इम्कान पर उमूमी रद्द अमल पूछा है। देखो भाईजान, यह तो होना ही था। भारत अपने आला तालीम के वजह से सारी दुनिया के ऊंचे ओहदों पर काबिज हो गया है और हमारे नजर में यह एक बहुत ही दानिशमंदाना अमल है। एक खातून को कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत में बिठा देना बहुत ही दानिशमंदाना अमल है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि घर में जैसे मौन को चुप कराया है, वैसे ही वो सुधा
अपने बक से सारे सियासतदानों को चुप करा देगी और मुकम्मल इस्तेकाम आ जाएगा बरतानिया में। यह बरतानिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा अमल है। Hello friends, due to popular demand, Mohan Shaving Cream is back as a news present for Yadagiri News. Good day to all, welcome to the latest news from Yadagiri News. As you're aware, UK politics is at a boiling point with indications of Rishi Sunak not being able to form the next government and Labour having Labourless mandate. It is time for a new leadership to stabilise UK economy. In the past few weeks, a new name has evolved of a lesser known person to the public outside Sutton, but very influential in and around South Borough. The candidate goes by the name Sudha Iyer. Known as Sudha to a friend, seems Sudha is a multitasker who has been able to manage home, personal and professional life very efficiently. People say she is a walking Bible for people in distress and can have multitude of contacts who can help people in need. She is an independent candidate being represented by sari as her election logo. An Indian attire which symbolizes woman's strength in Indian household. Difficult to drape as it requires multiple people to align and beautify the drape, and not an easy task for undraping as again it requires multiple people coordination. We wish Sudha all the best and we hope UK would be able to drape its economic worries like sari as we get into the next millennial. Now we end the news with a Hindi slogan which is catching fire. Jab tak suraj chand rahega, sari hamara abhiman rahega. Jab tak sun and moon rahega, Sudha ji ka naam rahega. Thank you very much. Hello ma'am, thank you for inviting us inside your house. You're welcome, ma. As you're aware, we are all going house to house, okay, to interview people with regards to the general elections that are coming up. Okay, so first of all, are you a UK citizen, ma'am? I global citizens. Of course, UK also my country, ma. Okay, that's nice, that's nice. Yeah. So you definitely looking forward to the general elections, ma'am? Of course, lah. Have to look forward to. That's only when we choose our candidate. Oh, that's interesting. So one very excited voter we are sitting with right now. Can I ask you, if it's not too personal, who are you going to vote for? Sudha Iyer, lah. Oh, okay. Well, that definitely is one vote, one very strong vote for Mrs. Sudha Iyer. And why would that be so, ma'am? Have you ever had a good look at her or not? After the Queen passed away, got no woman of substance already in UK, So we need Sudha Iyer to be the Prime Minister. So then we got woman of substance, talking, making sense of this country. Otherwise, where will the country go to? That's why I vote for Sudha Iyer only, no one else. Well, that's interesting. So as you all heard, okay, there is one very good vote going to Mrs. Sudha Iyer, but only for her personality, not because of her policies, not because how she handles her family or the larger UK family, but only because she looks good, she is able to stand well, okay, and well, yes ma'am? Because she's so good, she can handle the UK family, her family, everything, that's good. That is some confidence. That is a confidence on the vote. Okay, let's move on to the next household. See you guys soon. Thank you. Thank you. Hello, ma'am. Hello. Thank you for inviting us in the house. Okay, so first time we are going to meet a voter who doesn't only think upside down but also reads the newspaper upside down. Okay, but ma'am, anyway, we are here to get your views on the future general elections that are coming up. Okay, so are you excited? First of all, are you a local citizen, ma'am? Local citizen, I am. Oh, that's nice. That's nice. And if it's not too personal, who do you think you will be voting for? Voting for Iyer Sudha. Who? Iyer Sudha. Who? Iyer Sudha. Iyer Sudha. Okay, so Mrs. Sudha Iyer she'll be voting for. Okay, and can I know why not the other contenders, but why only Mrs. Sudha Iyer? Mrs. Iyer Sudha can rule a house because she's like my mother. And if my mother can rule my father, she can rule a country. Wow, I do not really know how to answer this. Okay, because Mrs. Sudha Iyer because a mother can rule the father, so Mrs. Sudha Iyer can rule the nation. Okay, that's an interesting viewpoint. But yes, that's what the voters are thinking. So this is another strong vote for Mrs. Sudha Iyer. Okay, so let's now move on to the next household. Thank you, ma'am. Thank you. नमस्कार. आज क्या खबर बात में शिवसेना आणि
भाजपच्या गठबंधन धोक्यात आहे. सुधा मूर्तीने केला मोठा खुलासा. वरिष्ठ अभिनेत्री सुधा चंद्रनने राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला आहे. चित्रपटाचे नाव आहे मोहन दस आणि अर्जुन को गुस्सा क्यों आता है. सर्व सुधा नावाच्या मुलींनी मोर्चा काढला आहे की निर्माच्या ऍड मध्ये सुधा नावाचा समावेश केला पाहिजे आणि नवीन ऍड मध्ये नाव असं घेतलं पाहिजे हेमा, रेखा, जया, सुषमा आणि सुधा. सर्वात मोठी बातमी विदेशाहून आली आहे. ऋषी सुनकने पंतप्रधानाच्या पदावरून राजीनामा दिला आहे. आता सुधा अय्यर निवडणूक लढणार आहे. तिथले लोक असे म्हणतात की सुधा अय्यरने युकेच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन फोटो काढले आहेत. तिचे फोटो पाहून लोक वाटतं तिला वोट देतील. आता लोकांची प्रतिक्रिया आपण बघू. अब की बार सुधा अय्यर की सरकार. वोट फॉर सुधा, वोट फॉर सुधा, वोट फॉर सुधा. कौन सुधा अय्यर? आम्ही सुधा अय्यरला शुभेच्छा देतो. आजची बातम्या संपल्या. भेटूया उद्या रात्री 9 वाजता. शुभरात्री. வணக்கம். இது பிபிசியின் உலக செய்தி அறை. முதலில் பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தல் பற்றி விவரங்கள். ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டன் பிரதமர் பாப்புலர் ரெஃபர்ட் as மிஸ்டர் டிஷி ரிஷி பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவர் மாமியார் சுதா நாராயணமூர்த்தி அவரின் மேல் மோசடி குற்றச்சாட்டின் புகார் செய்தார். வாருங்கள் அவர்கள் கிட்டேந்தே அவர் மாப்பிளை பற்றி கேட்போம். Play the audio of Mrs. Sudha Narayanamurthy, please. You know, my son-in-law was nicknamed as Dishi Rishi by the British media. And therefore I thought he earned this name because he does the dishes well and helps my daughter. That Somari Kelsake Barlillar, the man, has misled the nation with his name and let the wives of Britain down. This should be a lesson for all the hubbies, including mine, who I made him do dishes back at home to chants of Narayana, Narayana, and hence he earned the name Narayanamurthy. Narayana, mugito illo kelsa. வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த விவகாரத்தினால் அதுவும் மாமியார் கிட்டேந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். ரிஷி அவர்கள் வீட்டையும் எக்ஸிட் செய்தார். This is trending big time as Vexit, V-exit on Twitter. Rishi was vexed and had to exit his வீடு என்று அவர் செய்தியாளர் பதில் அளித்தார். அதைத் தொடர்ந்து ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் தொடங்கப் போகிறது. அந்த வகையில் கட்சி தலைவருமாக பிரதமர் பதவிக்கான தேர்தலில் இந்திய கேரளா மாநில வம்சாவளியை சேர்ந்த காரில் வளர்ந்த காந்திவெளியில் படித்த புன்னகை அரசி மிஸ் சுதா மோகன் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போது இப்பிரதமர் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு சுதாக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் ஸ்ரீ பொய்யானந்தா ஜோசியரை கேட்போம். இவர் யாரை கை காட்டுகிறாரோ அவர்தான் பிரிட்டன் நாட்டின் வருங்கால பிரதமர் ஆவார் என்று அவரே தெரிவித்துள்ளார். ஓவர் டு ஸ்ரீ பொய்யானந்தா ஜோசியர். ஓம் நம சிவாய. என் பெயர் ஜோசியர் பொய்யானந்தா. நான் நிஜமாகவே பொய் சொல்வேனாக்கம். என் பெயர்லயே ஒரு டிஸ்கிளைமர், நோ செப்பரேட் ஒன் ரிக்வயர்ட். கேட்டடா, இப்போ சுதா மோகன் பிரிட்டன் நாட்டின் பிரதமர் ஆவாரா இல்லையா என்ற தேவ பிரஷ்னம். பாருங்கோ, ஒண்ணு, the prime minister Rishi's seat became vacant because of his மாமியார். அவர் பேர் என்ன? சுதா. அவர்கள் ஹஸ்பண்ட் பேர் என்ன? நாராயணா. Our Sudha's husband is also fondly addressed as Mohan Narayana. தெரியுமோ? Because of his uncanny tendency to behave like a நாரத முனி. இந்த சகுனம் பார்த்தேளா, இந்த லக் இண்டிகேஷன் பார்த்தேளா, எப்படி அடிக்கிறது பாருங்க. இப்போ நம்ம கிரக நிலையங்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். நம்ம சுதா மோகன் was born on 15th of July 1973. அடேங்கப்பா. She is born on the powerful day of Guru Purnima. பிறந்ததே குருவாக. குரு கா குரு है वो. She has taken birth to teach all the nonsense people a lesson. I say, सबको सुधारेगी. ये இந்த சுதாரேகி வேர்ட்லயும் சுதா ஆக்கம். You know what that slogan should be? सुधा रहेगी और सुधारेगी. सुधा रहेगी और सुधारेगी.
இன்னும் போனால் she is best to handle all the KKs in the country, I say. இப்ப பாருங்களேன், she hails from Kerala 1K, grew up in Khar 2K, studied in Kandivali 3K, and is married to the biggest KK ever. இன்னொன்னு சொல்றீங்களுங்க, சும்மா அவுத்து விடலாம் சார். சுதா பிளஸ் தந்திரம் என்றால் என்ன? சுதந்திரம், நேம்லி ஃப்ரீடம். அந்த நேம்லயே பாருங்க சார், புல்லரிக்கிறது சார். வாட் மோர் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஒன் will want in a prime minister, I say. அதை விட இன்னும் சொல்ல போனா, சுதாவோட கைப்பக்குவம், cooking skills she has inherited from her amma is going to be the world renowned, you see. UK will be on the global map for the best Moravukal Kerala. Why do you think Endemol Productions, who runs the MasterChef UK series, is named Endemol? Because Sudha is the Endemol, our daughter, British people's dearest daughter. எல்லாம் பாருங்க எப்படி அமைஞ்சிட்டு வருதுன்னு. So to summarize, there is zero dosha in the horoscope, but she will make a lot of tasty doshas. 10 Downing Street will have a new name, I say, 10 Dining Street. And we all know what her husband will respond when she asks him to do the dishes. Yes, Minister. And therefore, taking all these into consideration, the Deva Prashnam says, Pradhamar Therthalil Sudhavin Vetri 100% Ketala. Sudha Ammayittu எனக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் எம்பையர் சிபாரிசு பண்ணி வாங்கி தர சொல்லுங்க. நன்றி, வணக்கம். We are getting breaking news. Reuters is reporting that Mrs. Sudha Iyer of the South Indian British Party is to be UK's next Prime Minister. She replaces Rishi Sunak, who on advice of his father-in-law has decided to join the BJP. Sudha Iyer's party has only one seat in the Commons, but has emerged as the consensus candidate. This is the first time in the history of Great Britain a Prime Minister's party has only one seat. Mrs. Iyer has moved fast. She has appointed her friend Ruchi Srivastava as her Chief of Staff. MPs have expressed surprise in the speed of the appointment. Ruchi has no previous relevant experience. In another development, her husband Mohan Iyer has tweeted that unless a full-time housekeeper and a South Indian cook are included in PM package, Sudha will not be allowed to accept the job. Her boys, one a junior doctor and another an aspiring one, have released a statement that they will support their mum taking up the job only if a 50% increase in junior doctor salary is promised. In another move, the PM has appointed economist Amitabh Srivastava as her chancellor. FTSE crashed 500 points. A truss, courting-type meltdown is being feared, but Iyer is firm on her decision. Mrs. Iyer will head to Buckingham Palace at 4 p.m. today. She will be wearing a red sari and at her special request be driven in a made-in-India Maruti. It is not clear if her husband will accompany. We will keep you updated about the latest developments straight after the break. ભાઈ ચિત્રલેખા ન્યૂઝથી ગુજરાતીમાં વાત કરું છું અને આ વખતે અમદાવાદ નથી, અમે યુરોપ આવેલા છીએ. ઘર ઘરની સ્ટોરી નામક ડ્રામા છે અને હું કેતન દવે બોલી રહ્યો છું. એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે કે યુકેમાં સુધાબેન અય્યર જે છે એ ઇલેક્શનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. હવે આના ઘણા મતલબ હોઈ શકે અને આના ઘણા પ્રચાર ચાલુ છે. આપણી ગુજરાતી મિત્ર મંડળ અને મહિલા મંડળ એ સેવ ગાંઠિયા આપવાનું નક્કી કર્યું છે કે ભાઈ સેવ ગાંઠિયા લોકોને ખવડાવો. સટન નામનું ગામ છે, એક સટન, આપણે બટન જેમ કહીએ ને એમ સટન છે અને આપણે કહીએ અરે 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 એમ એક ગામ છે સરે. હવે આ ગામમાં ઊભા થયેલા છે સુધાબેન. સુધાબેન આપણા ભારતીય મૂળના છે અને એમનું દિલ વિશાળ છે, બહુ સારું વ્યક્તિત્વ છે એમનું, એ લોકો એમને ચાહે છે. તો ગાંઠિયા જલેબી ખાવા હોય તમારે તો તમે સટન કે સરેમાં આવીને સુધાબેનને વોટ જરૂર આપજો, કેમ કે સુધાબેન આપણા ભારતીય મૂળના છે, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ જાણે છે અને હમણાં તો એ શુદ્ધ શાકાહારી બની ગયા છે. એટલે ઢોસામાં કાંદા લસણનો પ્રયોગ કરે છે જેથી જૈન લોકોને ઘણી તકલીફ થાય છે. પણ એના સિવાય આપણું બી કોઈ ભારત મૂળનું કોઈ માણસ હોવું જોઈએ ને ભાઈ. એટલે મેં બી વિચાર કર્યો છે કે ઇંગ્લેન્ડના જેટલા લોકો છે, ઇંગ્લેન્ડમાં જેટલા આપણા ગુજરાતી લોકો છે અને પારસી લોકો છે અને વોરા અને ખોજા લોકો છે જે ગુજરાતી બોલે છે, જે મુંબઈ સમાચાર વાંચે છે ને આપણું આ ગુજરાતી રંગમંચ
ના જે ક્લબના મેમ્બર છે, રોટરી ક્લબ ને ગુજરાતી રંગમંચ ને પિકેડેલીમાં આવે છે અને શેખ ચીલીની કહાનીઓ જોવે છે, બધાને મારી વિનંતી છે, હું તો ન્યૂઝ રીડર છું, છતાં આપણે તો શું છે કે બધી પંચાયતમાં પડવું એ જરૂરી હોય છે. એટલે મેં નક્કી કર્યું છે કે જે લોકો સુધાબેનને વોટ આપશે એમને હું મારા તરફથી ઊંધિયું ખવડાવીશ. અને ભગવાન તમારું ભલું કરે. જય શ્રી નારાયણ, જય શ્રી રામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન તમારું ભલું કરે. Meanwhile, ये कौन कमबख्त है जो रात के 11:30 बजे मुझे फोन कर रहा है? कौन हो भाई तुम, और तुम्हारी तस्वीर क्यों टेढ़ी है? मैं आरडी बोल रहा हूँ. हाँ बोलो आरडी बर्मन साहब, कैसे हैं? सर रतन डाटा बोल रहा हूँ. डाटा साहब? आप? डाटा सॉरी सर, डाटा. क्या तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो? नहीं सर, आई एम नेचुरल. मेरी मम्मी ने वुडवर्थ ग्राइव वाटर, बात है मेरी माँ ने भी वही दिया. सर वो शरीफ साहब का इंट्रोडक्शन करवा दो ना. Be Sharif. Be or not to be is a question and RD publishes creation. लेकिन एक बात बोलता हूँ, छोटा मुँह और बड़ी बात, लेकिन शरीफों का जमाने में हमने हाल ये देखा है कि शराफत छोड़ दी मैंने. क्या बात है? Hello all. Today we are speaking to Mr. Sharif of the Sumo Party. Mr. Sharif, welcome to the show. First off, my apologies. I'm not sure how to pronounce your first name. It's Bahut. Hello all, happy to be here with you today. So, Mr. Bahut Sharif, can you please tell us why we need to consider Ms. Sudha Iyer for Prime Minister of the UK? As everybody is aware, UK faces many challenges on many fronts today. If you look at some of the key skills required to tackle these challenges, would you go for the old guard or would you rather go for somebody with a new perspective? Let's look at a few of them. Diversity. Wouldn't you agree that Sudha is more suited in tackling that in today's Britain? Unity of the nation, need I say more? Financial prudence, anybody else could have done better. And the list of the other adjectives on there, everybody would agree Sudha probably comes out on top. Clearly what your party thinks of him. So, you have shown that Sudha has a lot of positive attributes. On the flip side, are there any weakness of Sudha and how does she compare on those to her competition? As you rightly noted, Sudha has a multitude of good qualities and strengths. However, if there is one activity that's not probably on a favorite list, it's dancing. But even that, would you rather see Sudha or more of the same? So, Mr. Sharif, Sudha is relatively a newcomer in the political space. How can you tell if she's making an impact? They say imitation is the best form of flattery. If you look at the opposition, first they started copying our fiscal policies, our economic policies, our immigration policies, and now down to our attire. Look at this. All you need to do is stick a pair of goggles on her head, and she's imitating the official Sudha ensemble. Very nice. Okay. Based on a recent public poll, the top 3 concerns of the UK public are cost of living, funding of the NHS and war in Ukraine. Which of them do you think Sudha will address first? Sudha comes from a project management background and she's used to multitasking. I'm sure she'll put in competent teams to address each of those in tandem. However, on day 1, she said that she's going to work on something that's close to her heart. She's going to bring in legislation to ban from the UK something she despises. What? Ban Boris? That has a ring to it. And I'm sure a lot of people would not be too unhappy with that outcome. What I was actually referring to is the selfie stick there. You see, Sudha is a firm believer that in any get-together, the fun is roping in some reluctant guests and getting them to take tons of photographs of the women in their lovely saris. However, the presence of these selfie sticks gives these guests an excuse not to do that. And so it's easiest if we just ban them. So thanks so much, Mr. Sharif, for your insights. Really appreciate it. Any final comments on your side? As they say in the subcontinent, ab ki baar Sudha Sarkar. Go Sudha!
कैसा लगा मेरा क्रिएटिविटी? अबे दाता, वो सब तो ठीक है, लेकिन कॉमन मैन भी चाहिए अपने को। हाँ, तेरा है ना वो गार्डन में जो घूमते रहता है नेशनल पार्क में, उसके पास जा। अभी जाऊँ क्या? अभी तो थोड़ा बारिश हो रहा है। नो यू गो नाउ, वी आर वेरी बिजी। बाय द वे, तेरा क्रिएटिविटी बकवास है दाता। वी नीड समथिंग विच इज नॉट 1970s। क्या बात करता है तू? ताइमा यक्का सेल्स। अबे डांटे तूने डांट वाड़ेला है। ताइमा यक्का सेल्स इन इंडिया। ये देख, इसको बोलते हैं पोस्टर। सुन, ये मराठी मानुस है, इसमें ज्यादा बोला तो हम लोग फंस सकते हैं, तो कुछ बोलने का नहीं। ओके? उषकाल होता होता काळ रात्र झाली, उषकाल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. उषकाल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. उषकाल होता होता काळ रात्र झाली. आम्ही चार किरणांची आस का धरावी, आम्ही चार किरणांची आस का धरावी. जे कधीच नव्हते त्याची वाट का पहावी, जे कधीच नव्हते त्याची वाट का पहावी. कसा सूर्य अंधाराच्या वाहतो पखाली, कसा सूर्य अंधाराच्या वाहतो पखाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. उषकाल होता होता काळ रात्र झाली. काय मंडळी, तुम्ही कार्टून बघत बसले? उठा उठा, सज्ज व्हा. हातात मशाल घ्यायची वेळ आली आहे. मशाल घेऊन पेटवायची वेळ आली आहे. 2012 मध्ये लंडन ऑलिम्पिक संपलं, स्ट्रॅटफोर्डची मशाल विझली आणि फक्त लंडनच नाही, अख्ख्या युके मध्ये फक्त अंधारच अंधार. अरे ब्रेक्झिट काय, रिसेशन काय, इन्फ्लेशन काय, ती कोविड प्लॅनिंग काय, अरे कुठे नेऊन ठेवला युनायटेड किंगडम माझा? उठा, आता त्या सुधा मूर्तीच्या जावयाला काढून सुधा अय्यरला 10 डाउनिंग स्ट्रीट मध्ये पाठवायची वेळ आली आहे. आणि ती जर का 10 डाउनिंग स्ट्रीट मध्ये आली तर नरेंद्र मोदी परत म्हणेल की मी लंडन मध्ये पुन्हा येईल, पुन्हा येईल, पुन्हा येईल. त्याच्यामुळे ताईबाई अक्का, विचार करा पक्का आणि मशालीवर मारा शिक्का. अब की बार सुधा सरकार. In the run-up to the elections, we'll be bringing you insights into each of the candidates' lives, their childhood, their family, their friends, colleagues, all of whom are going to tell us a bit more about them. Join us tonight for the Inside Scoop. Thanks, Arjun. Yeah, and we're also receiving some breaking news from the G7 summit, where news of Sula's candidacy has just reached the world leaders. Take a look. News of the candidacy has also been spread to the current Oscar ceremony, where they're giving a quite positive reaction.
In fact, Bollywood was so excited to hear the news that they sent over a special mashup video to support the campaign. They may have been a bit confused about the name though. डालोगी क्या ले झंडू बाम हुई डालेंगे तेरे लिए आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। पकड़ पकड़ बम्बे तो अस्सी नब्बे पूरे 100 रुपये का बच्चों 200 कम हो उड़न शर्माना आजा मेरी होने आजा हरे कृष्णा हरे राम गम रहेगी हो चाहे तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल धड़की हो जाए तो प्यार दो प्यार दो मैं छठी यमुना पगला दीवाना मैं छठी यमुना पगला दीवाना किसी बात की न जानो Sorry viewers, apologies for letting that segment run for so long, but I was quite enjoying that. To research further into the topic, we went around asking some of Sudha's close friends to react to the news. Here we are with Dr. Ravi Baikari. So Sudha Murthy, so we all No, it's not Sudha Murthy, it's Sudha Iyer. Oh, our Sudha. Yes. Yeah, Mohan ki Sudha. No, that's Sudha. So apparently she's standing in for Prime Minister. Is she? Yes. Oh, absolutely. She will be 100% better than Liz Truss. Do you think so? Of course. Okay. Anybody can be, but Sudha will do wonderful job.
What do you think UK would do? What do you think country would achieve? The country, the national dish will be aloo paratha. We all, especially the doctors, will get 37% pay rise. Of course, our family is going into medicine. Everyone will dress up properly to workplace. There will be 3-day working week. Okay. If you do 4th day, they will get an expensive holiday free of cost paid by the government. Okay. What more you want? And then number 10 will come to Chi. Okay. Just watch. What do you think she would do for tax? Tax? Yeah. No inheritance tax for anyone. Yes. And the more you earn, less the tax you pay. That will be the motto of the campaign. Okay. And how do you think her cabinet would look like? The cabinet, of course. Mohan will be Home Minister. Dilip will be Sports Minister. Shubha will be Family Welfares. Then Meenakshi will be International Relations and Public Affairs. Bommaya will be Chief Whip for the party. Ila Bommaya will be Wellbeing Officer. And then Shailesh will be Energy Minister. And so on. What will I be? What will I be? You will be Health Minister, and most likely I will be the Deputy Prime Minister. Just watch. Yeah, just watch. Then you are all for it. Yes, I am up for it. Sudha, when do we start the campaign? Today? Now. And now we have Mr. Sujit connecting from Dubai. Mr. Sujit, you've known Sudha for quite a long time. Do you have any particular memories of your time with her? After going home, whole night I sat. I put all the data in that. And next day morning when I came to the office and I was about to show it to Mohan, and I realized it is not saved. I was nearly in tears. One is because of the hard work, and second was how Mohan is going to react. And then you came along and you said, come on Sujit, hota hai yaar, in your very typical style, chalta hai yaar, ho jayega, don't worry. You know, Mohan दिखता है उतना खड़ूस नहीं है. He's like a coconut. बाहर से कड़क है, अंदर से soft है. You gave me some pep talk. That actually helped me out, definitely. But at the same time, I got a hint. दाल में कुछ काला है. We are now joined by Oliver, a close associate of Sudha's for the past decade. Mr. Oliver, what do you think of Sudha? Just one of those wonderful people that just bring spark and enjoyment to the working day. You're one of those amazing people who have the unique ability to turn up the heat when needed and pour the sugar at the same time. Now cutting over to Geraldo in Brazil. You worked closely with Sudha when you were in the UK a few years ago. What are your particular memories with Sudha? Actually, she's a very special person for me, professionally, but also personally. When I met her, it was a little bit crazy because she did not understand what I said due to my accent. I know that's terrible. She used to joke with me, considering the way that I talk with the hands and doing kind of things that it was impossible to understand. And I realized a beautiful person that she is, extremely opening and making me feel extremely welcome in UK. Like a mother, when I forgot clothes and it was cold, she brought everything from home to me, gloves, caps, everything. And this kind of modern way, it was not just with me, but with everybody in the office. We will now speak with Dr. Anish Anderia, the President of the Wildlife Conservation Trust, and ask his views of Sudha Iyer as PM and whether he thinks she'll be able to tame a wild Briton. It's refreshing news that I ever had, because I wanted an Indian to actually rule Great Britain, and through Sudha, we have the right person to do that, and I think it'll be very good because I think she has a heart of gold. She's somebody who's lived his life with an animal, and because of that, she understands both humans and animals very well. She's produced babies through an animal as well, with the help of an animal. And so I think it's a great mix of a person who understands, as a woman, she understands the soul of so many other people. She's very, very compassionate, and she, because of life that she spent with an animal, she is ruthless. So it's a perfect mix
is like bhel puri. You understand bhel puri? Yes. The bhel puri is basically you have the khata, you have meetha, and you have tikha. Right. So she's a great mix of that, and I think knowing her for so many years now, I know that she will be a great leader. She will be able to make people dance on her tunes, and because an animal she could control. So you can imagine what she will do for the nation. What does this have to do with policy making? Well, policy is basically Sudha is not going to write policies. She's going to make people do that. Right. And so she has her own ways of handling it. And I have dealt with her, and I mean I have had some experience of dealing with her. She's a very, very tough cookie, and she's not going to say here and no. So she will make things happen. Plus, I think it will be very good for the Indian diaspora in London. There's so many people who live in India with the aspiration to kind of make it big. And most of them unfortunately don't. And I think in Sudha you will have a person who will be compassionate towards them and is going to make sure that the lawns that are there behind in her house can be opened up, and there could be many tents that can be put up for many of these people who come there, and they can spend those initial 15-20 days out there. So I think, and because I know that she's a great cook as well, so she'll balance work as well as this. And so for her, doing social work, handling an animal, going to office is seamless. Right. So if you had a vote, it would be a yes for Sudha? Of course. I think, and I would also urge my friends in the cell biology divisions of the TIFR to kind of extract her gene and kind of replicate Sudha's, because we need more of her. Especially in the West. India, of course, we have many such Sudhas. That's a great message. The world needs more Sudhas. More Sudhas. Perfect. Good. I've just been told that we've been able to connect to Kesh and his lovely wife Aparna. Kesh was actually in running against Sudha for the seat of Prime Minister. Now, Mr. Kesh, now that you are out of the running, what would you like to say to Sudha? Hi Sudha, I cannot believe UK finally made the right choice. What UK made the right choice? In proper Bollywood style, the country will rejoice. You are the one friend whose number is on everyone's speed dial. Really? Bet Trump is already on the phone asking advice on how to handle his trial. Modi must be in the queue, desperate to know how to manage Rahul Gandhi. Putin must be next in line, asking you how to sort out rebellion ki andhi. Xi Jinping on another line looking for help on taking on Taiwan, while you try to sort out the fight between India and Pakistan. Number 10, here she comes, the agony aunt and best friend all in one. Aage aage dekho hota hai kya? It's only just begun. Happy. I know, it's only just begun. Yes. What a calamity for the UK. Come on. Yeah. Iron Lady, then comes May, then Liz, and Sudha. Absolutely. Well, I thought Sudha Murthy was going to come, but it's Sudha Iyer who has come back. Anyway, I think we'll have to live with what we're given. But hopefully Sudha Iyer can make some true changes. Make sure Indian food is the mainstay of British style of living. We have more Indian players in cricket team for the UK, for England, and also make sure that my mum, who is alone struggling in India, can get a permanent visa and stay with me. We'll vote for Sudha. आगे आगे देखो होता है क्या? Meanwhile, सुनो, इधर माली किधर रहता है? वो उधर तीसरा घर कान वाले के बाजू। माली, कैसे हो? तुम्हारा खास काम था, तुम्हारा ओपिनियन का जरूरत था। लंदन में सुधा जी इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही है, इंडिया की है। कुछ कमेंट्स? अरे बाबा, मेरे को क्या मालूम। रात बहुत हो चुका है, एक काम करो, स्टूडियो में मत बात करो, मोनो में बात करो। एक बात बोल, लंदन में सुधाकर बैठा हो या पुष्पेंद्र नाथ बैठा हो, मेरे को इधर आटा सस्ता मिलेगा क्या? वड़ा पाव सस्ता मिलेगा क्या? अरे बाबा, काय वेड़ा सारखा बात करता है।
आमची आहे, आमची हिंदुस्तानी, आमचा कलर आहे. उसल सस्ता मिलेगा. अभी उसल और झुमका भाकर से बाहर निकल के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच. शी इज अवर कलर, अपने अपना ही देशी है वो. अरे कलर पे मत जा, सब पॉलिटिशियन सेम होता है, लंदन हो या इंडिया. मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या? अरे बाबा तेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रमोशन कर ले, लोगों को फर्क पड़ेगा. मैं क्यों करूं तुम्हारा प्रमोशन? मेरे को क्या मिलेगा? असं पण तू गवत कापून बसला आहे, तर तुला काय मिळतात? क्या मिलता है तेरे को? ऐसे भी एक तो तेरा वॉइस इंटरनेशनल है. ठहर, मेरे को ये वॉइस ठीक करने दे बराबर. ठहर, वॉइस ठीक करता है मैं, ट्रेबल को इंक्रीज करता हूँ. ठहर. देख भाई, हम लोग ने सोचा सेलिब्रिटी लोग तो ठीक है, लेकिन कॉमन मैन का भी आवाज चाहिए. मैं क्या तेरे को कॉमन मैन लग रहा हूं? नहीं भाई, कॉमन हम लोग हैं, तू स्पेशल है, लेकिन जरा बोल दे ना, सुधा जी की जय हो, इतना बोल दे खाली. और मैं बोलेगा, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? वड़ा पाव मिलेगा, आटा मिलेगा, दूध देगा, मसाला देगा, ठेचा लाके देगा. अच्छा ठीक है, सुधा जी की जय हो. वाह माली, वाह रामू काका, वाह. मेरा नाम रामू काका नहीं है, मेरा लक्ष्मण राव शिरोडकर है. मैं थैंक यू लक्ष्मण राव शिरोडकर. अपने भी बहुत पिक्चर देखने लगता है फिर राम से का. अरे माफ करो, गलती हो गया. रामू काका होता है क्या किसका नाम? Well, it's not all sunshine and roses for Sudha's new election campaign. Amongst the overwhelming support, there are still some doubters. What? Is she crazy? Are you sure? It's Sudha Iyer. Sudha Iyer, yes, Prime Minister campaign starting soon. Oh my God, that's going to be a disaster, Ravi. Why? I'm telling you, we don't want another Preeti Patel. We've got enough brown people already. She's got no experience whatsoever in any policy making. All that she would think about is how would Prime Minister look like on camera. I pity press officers because no photo will be cleared. It'll be a disaster, I'm telling you. No, she will cut the tax, she will increase doctors' pay, and Exactly. they will be happy. Exactly. She'll probably cut down inheritance tax. She'll probably increase doctors' pay because 2 of her kids are going to be doctors anyway. It'll be complete nepotism. I'm telling you, honestly. All her friends will be in a different cabinet post. Right? You might even become a deputy prime minister. She'll probably I would love that. I know you would love that, but I wouldn't. She would make me probably health and research minister. So you know what she will do? She'll put all the people she knows in different groups, and then she will keep controlling just the way she is at home. Complete control freak. Everything that comes out will be edited. Believe me, it will be a disaster. So you're saying that we should stop the campaign now, or? If I were you, I would have a quiet word with Mohan and ask him to put some sense into her head. To have with us a migrant worker who moved to the UK in hopes of a better life. Please ignore any resemblance that you see to Dr. Anish Andaria. अरे भैया, हम इधर आया हूँ, हम कितने दिन से इधर उधर घूम रहा है, वो आपको उधर दिख रहा है वो बिल्डिंग, उसके नीचे हम 2-4 दिन से रह रहा है. हमको इधर बोला था कि हमको इधर बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, हमको कुली का जॉब के लिए हम उधर से आया. हम किधर तो इंडिया में एकदम कच्चा गली में रहता था, उधर से हम इधर आ गए. तो अभी हमको इधर ऐसा तकलीफ हो रहा है ना, इधर खाने के वांदे, हम इधर उधर जाके इधर उधर कभी होटल के बाहर बैठ जाता है तो हमको पानी की तीनों बियर मिलता है, हमको पानी मिलता नहीं है क्योंकि इधर सब ऐसा आधा ग्लास छोड़ देता है ना. वो एटिकेट मालूम है ना, इधर ब्रिटिश का एटिकेट रहता है, तो वो जो पानी की जगह बियर मिलता, तो हम तो बियर पे अभी थोड़ा टून भी हूँ. लेकिन कैसा हालत हो रहा है मेरा कि मेरे को उधर लग रहा था कि मैं इधर आके एकदम अपना इधर का प्राइम मिनिस्टर भी तो अपना इंडियन है, तो अपने को आके उधर एकदम गार्लैंड के साथ एंट्री मार सकता है. लेकिन उधर प्लेन में साला मैं प्लेन से उतरा, 4 घंटा उधर इमिग्रेशन में अपना दिल लग गया मालूम है. और उधर लास्ट में उधर 4 घंटा हम तो गिर रहे, सब चक्कर आ रहा था, चक्कर मालूम है ना.
फिर एकदम आगे पहुंच गया ना तो उधर पानी का बोतल रखा था। मैंने उनको बोला कैसे लास्ट में रखना चाहिए ना, उधर उधर हम उधर रुका हुआ है तो इधर इधर अगर पूरा भूत आ गया तो उनको पानी पीने का भी टाइम नहीं था। तो ऐसा हालत में आ गया। उसके बाद हमको समझा कि सुधा बेन है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। तो हमको बहुत शौक, उसका बहुत फोटो देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे माता की उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो एकदम भगवान जैसा मूर्त है। वो हमारा जो इंडियन लोग इधर आएगा तो उनको बहुत हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि सुधा मैडम के लिए हमें सबको वोट करना चाहिए। और मैं तो इतना मानता हूँ कि सब टूरिस्ट जब इधर आएगा ना तो उनको भी वोट करा दो तुम, क्योंकि इधर बहुत टूरिस्ट आता है। करेक्ट। उनको बोलने का कि लंदन में जाओ और सुधा के लिए वोट करो। तो ये एक बार हो गया ना तो फिर बस अपन इधर है ना अपना पूरा इंडिया बना देंगे सुधा मैडम। और फिर हम लोग सब ऊपर पीछे गुरु जी करेंगे और फिर वो सबको ऐसा भेलपुरी, पानीपुरी, डोसा वो खिलाएंगे, है ना। वो तेल को एकदम ब्राउन पानी है ना उसकी जगह पे आपको ऐसा रंग बिरंगी पानी कर देंगे, साबरमती रिवर जैसा बना देंगे। तो हम तो बहुत बोल रहे हैं कि हम तो हमारा सब भाई बहन को सब को बोल रहे हैं, नडियाद में, सूरत में और इधर बड़ौदा में और दूर दूर तक हम सबको बोल के रखा है कि तुम अपना है ना इलेक्ट्रॉनिक वोट भेज दो इधर, तो हम उसको डायरेक्ट करके डाल देगा बूथ में। मतलब अब के बाद सुधा सरकार। सही बात। Now, before I hand back to the studio, the overwhelming sentiment in the country is one of adulation, adoration, and support. Ab ki baar, Sudha Sarkar. क्या बोले, मतलब इतने सारे गुण हैं कि कहां से शुरू करें। बहुत हो गई महंगाई की मार, ना बंद करने पड़े आपको बॉयलर, केटल और हीटर हर बार। लीजिए सवारी बिना झिझक इन योर कार, अब की बार सुधा सरकार। Varga, Sudhamma, Varga, Purachita Levi Sudha Varga, make England great again. सुधा सरकार की जय हो। सुधा सरकार की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा सुधा का जय जयकार रहेगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार सुधा सरकार। जब तक सूरज चांद रहेगा सुधा का जय जयकार रहेगा। अब की बार सुधा सरकार। इस बार मोदी नहीं सुधा की सरकार। अब की बार सुधा सरकार। अब की बार सुधा सरकार। अब की बार सुधा सरकार। लाल सलाम। हमारी नेता कैसी हो, सुश्री सुधा जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो, सुश्री सुधा जैसी हो। मित्रों, आप सबने कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं सुधा है तो संभव है। अरे भाई सब मिलके बोलो, अब की बार சுதா சர்க்கார். மச்சான் திரும்ப சொல்றேன், சுதாவுக்கு பார்த்து போடு ஓட்டு. புரிஞ்சதுல? ஒழுங்கா ஒழுங்கா பண்ணணும், சரியா? வரேன் தம்பी. त्याच्यामुळे ताईबाई अक्का विचार करा पक्का आणि मशालीवर मारा शिक्का. अब की बार सुधा सरकार. अब की बार सुधा सरकार. Go Sudha. Dear viewers, this race is now a foregone conclusion. They think it's all over. And it is now. Let's go to Sudha Iyer, outside number 10. Over to you, Prime Minister. Thank you, thank you, thank you. Thank you all for such overwhelming support and encouragement. It really means the world to me. Love you all. நான் இந்த வீக்கெண்ட் நம்ம வெளியில போறோம், மறந்துடாதீங்கோ. என்னடி சொல்ற? எனக்கு கமிட்டி மீட்டிங் இருக்கு, கிரிக்கெட் கமிட்டியில. அதே தான் போனோம் இல்லையா? இந்த வீக்கெண்ட் ஃப்ரைடே இருக்கு. நீ என்ன சொல்ற? நான் எப்ப பாரு கிரிக்கெட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு. யூ ஒன்லி திங்க் ஆஃப் கிரிக்கெட். அதை விட இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னு இருக்கு. Okay. We are going to number 10 Diwali party this year, aren't we? Prime Minister Sudha and Mohan have invited us. Oh my God, how can I forget that? I know. What an achievement for Sudha. She has reached where she wanted to be. Not without her hard work. Once she puts her mind to something, she will achieve. I think there is no limit to what she can achieve. But நான் ஏதோ president சொல்லிட்டு இருந்த டைம்ல she became a councillor. I'm still the president. I'm still wasting my time with the cricket club. Look at her, where she has gone. She is so focused even with small day-to-day mundane things. Once she entered politics, there's no stopping her.
ஆமாண்டி, அமேசிங் அச்சீவ்மெண்ட். ஐ ஹோப் ஷீ இஸ் நாட் அரேஞ்சிங் த பார்ட்டி ஹர் செல்ஃப். கொஞ்சம் டெலிகேட் பண்ணுவான்னு நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ஷீ கான் மைக்ரோ மேனேஜ் எவ்ரி திங்ல. எஸ், தட்ஸ் ட்ரூ. ஆனால் அவளுக்கு அவளே எல்லாத்தையும் டைரக்டாக சூப்பர்வைஸ் பண்ணினாதான் அவளுக்கு ஒரு திருப்தி. ஷீ இஸ் ஸோ ஃபோக்கஸ்ட் இன் தட். பட் இல்லை, டெஃபினெட்லி ஒன் பர்க்ஸ் விச் ஷீ வில் என்ஜாய் இஸ் தட் ஷீ டசன்ட் ஹாவ் டு குக். ஷியோர்லி இனிமேலேருந்து குக்கே பண்ண வேண்டாம். ட்ரூ. பட் ஃபாரின் செக்ரட்டரி மோகன் அப்பப்போ வருவானே, வந்து எதையாவது கேட்பானே, சாபுதானா வடா கேட்பானே, அது யார் பண்ணுவா? ஆமாம், மோகனுக்கு வேண்டி மட்டும் மேபி ட்வைஸ் a year குக் பண்ணுவாள் இருக்கும். எஸ், ப்ராபப்ளி ஷீ வில் ஹாவ் டு ஸ்டில் குக் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் a year. I'm really excited. Let us enjoy this weekend's Diwali party at number 10 with Prime Minister Jayasudha Iyer and Foreign Secretary Mohan Iyer. झुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम। कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। यार की गली से गुजरते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से,
ये आकाशवाणी है। अभी आप सुन रहे भूले पिछड़े गीत। समय मिला लीजिए, 11:30 हुए हैं। गणपत धारावी टाइम्स रेडियो लाव रहे, चैनल चेंज कर। बोले तो उस्मान बोल रहा हूँ धारावी टाइम्स से। नई खबर मिलेली है। एको बंद कर रहे। जो लोग बाटली वापरते हैं वो बोलो कि पुरानी बाटली वापस दे दे भाई। जंकू चौधरी ने बोलेला है कि तुम लोग बाटली वापस नहीं देता है तो फिर तुमको वो नारंगी मौसम भी कैसे पिलाएगा। कुछ समझेगे नहीं तो रापचिक देना पड़ेगा एक आध। बोले तो अभी पता चला है, क्या बोलते हैं, खबर मिली है। अभी खबर मिली है कि शोभा अयंगर जो है वो खड़ी हो रही है इलेक्शन के लिए। भाई लोग जो भी है वो, एक मिनट जरा चरस फूकने दो। जो भी है वो अपनी बस्ती की है, बोले तो अपने हिंदुस्तान की है, समझे क्या। तो उसको वोट करके जिताने का, खाली पीली नहीं किया तो कान के नीचे मार के गणपति उतारेगा, समझा क्या। और अलग बात में वो चरस जो आने वाली थी कराची से वो आई नहीं है, तो रोज मेरे को फ़ोन करके पूछने का नहीं, समझा क्या। चलो पुलिस का सिग्नल का आवाज़ आ रहा है तो धारावी टाइम्स जय हो।